टैली प्राइम, ये टैली का प्लेलिस्ट का नाम होगा फ्रेंड्स। ये हमारा कोर्स पहला है, इसमें तकरीबन 20 चैप्टर्स हैं। सो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे टैली का, और आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती हैं, प्लेलिस्ट चेक करें। यहाँ पे काफ़ी क्रिएटिव्स की वीडियोस है, एजुकेशन वीडियो फिर ये भी हमारी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब में वीडियो स्टार्ट करने से पहले कोई भी नया काम करेंगे तो भगवान जी का नाम लेना जरूरी है। तो ओम गणेशाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे। चलिए फ्रेंड्स, आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर टैली प्राइम विद GST, अ कंप्लीट ट्रेनिंग गाइड फॉर स्टूडेंट्स एंड बिजनेसमैन। इसका चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं हम। सो फिर आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, बुक कीपिंग अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, जनरल लेजर, डिफरेंस बिटवीन जनरल लेजर, subsidiary books, subdivision of ledgers, rules for posting entries in the ledger, steps for balancing ledger account, trial balance, finance account, बैलेंस शीट। इसमें ये टॉपिक्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए एजुकेशन वीडियो टैली क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारा पोस्ट सेशन भी में एक्टिव रहें, क्योंकि पोस्ट सेशन में हम आपको असेसमेंट दिया करेंगे जो टैली के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं या आप एक नोट्स बना सकते हैं अपने। हम जो बोलते हैं आप उनको लिख भी सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स है फ्रेंड्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स हमारी टैली की। सो फ्रेंड्स, आप कमेंट करें आपको क्लास कैसी लगी। तो हमारा पहला पार्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का सबसे पहला पार्ट है फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। Accounting is the language of business. In other words, we can say that accounting is a systematic and comprehensive recording of financial transactions pertaining to a business. Accounting also refers to the process of summarizing, analyzing, and reporting of transactions. The financial statement that summarize a large company's operations, financial position, and cash flows over a particular period. Accounting is a very important aspect for recording the every business transaction. It may be handled by a bookkeeper and accountant. Accounting plays a key role in running a business because it helps you track and income expenditures, ensure statutory comprehensive, and provide investors, management, and government with quantitative financial information which can be used in making business decisions. So फ्रेंड्स, अब बारी आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की। Objectives of accounting may differ from a business to another business depending upon their specific requirements. However, they are following the main objectives are as follows. So first part आता है to keep systematic records, to estimate the financial position of business, to ascertain the profit of the business, to protect business property, to facilitate rational decision making, to satisfy the requirements of law. फ्रेंड्स, अब आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट, जो कि हमारे दो टाइप के अकाउंट होते हैं बेसिकली, फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंट। तीसरा यहाँ जुड़ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर इसके थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम इन तीनों के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग refers to the bookkeeping of financial transactions by classifying, analyzing, summarizing, and recording financial transactions like purchase, sales, receivable, payable, and financial preparing the financial statement, which includes income statement, balance sheet, cash flows. Cost accounting.
Cost accounting is the most commonly used in the manufacturing industry and an industry that has lots of resources and cost to manage. Cost account concerns itself with recording and analyzing manufacturing cost. It looks at company faced on changing the constant cost like rent, variable cost, changing cost like shipping charges, and how they are affect a business and how these costs can be better managed according to the accounting tools. It also helps to control the cost of provide government information to the management of making decisions. Management accounting. Management accounting relates to the use of accounting data collected from financial accounting and cost accounting for the purpose of policy formulation, planning, control and decision making by the management. So हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं अकाउंटिंग शब्दावली. सो इसका पहला पार्ट है ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन दो टाइप के हैं इसमें, कैश ट्रांजेक्शन, नॉन कैश ट्रांजेक्शन. कैश ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल प्रेफरेंस, कैश आइदर रिसीव्ड और पेड. नॉन कैश ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल प्रेफरेंस जैसे लाइक आगे डिस्क्रिप्शन, डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑन गुड्स एक्सेट्रा. एग्जाम्पल माने सेल्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज फॉर कैश और क्रेडिट. Subscribing to a Netflix premium plan. Purchase of inventory or cash credit. Purchase of an asset. Disposal of an asset. Payment of salaries to employees. Classification of transaction. सेकंड लगा है प्रोपराइटर. थर्ड हमारा कैपिटल. कैपिटल का फॉर्मूला फ्रेंड्स ध्यान रखें इसमें, कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज. कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटीज. फोर्थ आता है फ्रेंड्स हमारा ड्राइंग्स. फिफ्थ लायबिलिटीज. There are two types of liabilities, long term liability, short term liability. इसके बाद फिर आता है हमारा assets. assets आता है फ्रेंड्स दो टाइप का, जैसे current assets and long term assets. फिर आता है इसका तीसरा intangible assets. Intangible assets presents last in the assets section of the balance sheet because they are unlike current and non term assets. Intangible resources like contract, patents, trademarks are not physically in nature, usually asset expenditure data. सेम क्या रहते हैं गुड्स हमारा, जो भी हमने परचेज किया, जो भी सेल किया गुड्स जो हमें पढ़ाए हैं. अब आता है डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस एसेट्स. गुड्स आर परचेज और सोल्ड एवरी डे while assets are not. They are purchased or sold at a certain period. Assets providing long term benefits. 8th आता है हमारा परचेजेस. 9th आता है हमारा सेल्स. 10th स्टॉक. 11 डेप्टर्स. 12th क्रेडिटर्स. 13th आता है हमारा इंसॉल्वेंट. 14 bad debts. 15 income. 16 expenditure. 17 revenue. 18 expenses. 19 income losses. 20 invoice. फिर आता है हमारा वाउचर्स. फिर आते हैं डिस्काउंट हमारे. उसके बाद आता है हमारा अकाउंट. अब फ्रेंड जहाँ हमारा अकाउंट आता है वहाँ दो टाइप के अकाउंट आते हैं मेनली, पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. टाइप्स ऑफ अकाउंट. ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्सन, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस. रियल, नॉमिनल, पर्सनल. पर्सनल में आता है नेचर पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रियल में आता है टेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट. नॉमिनल में कुछ नहीं आता फ्रेंड्स. सो मैं पर्सनल में जो हमारा पहला है नेचर पर्सन, उसमें मेड बाई गुड होता है. वहीं बात करें हम आर्टिफिशियल की तो वहाँ पे आता है मेड बाई मैन. अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेटिव की तो यहाँ पे फ्रेंड लिख रहा है इसमें बताते हैं हम, The account represent to any person. These includes outstanding interest account, outstanding wages account, prepaid expenses. यहाँ पे अगर हम एंट्री की बात करें, द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल अकाउंट. टेंजिबल में फिर जैसे आते हैं एग्जाम्पल मशीनरी, हमारा कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया. इंटेंजिबल में जैसे मान लें फ्रेंड्स कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क. कॉपीराइट फ्रेंड्स वैसे हो सकते हैं जो कॉपीराइट के लिए आता है, बस वही है फ्रेंड्स में भी. द रियल अकाउंट इज द रूल. डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट. सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की. दीज अकाउंट्स टाइप्स आर रिलेटेड टू इनकम और गेम्स एंड एक्सपेंसेस और लॉसेज. द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेम्स. अब बारी आती है बुक कीपिंग सिस्टम. जो दो टाइप के बुक कीपिंग होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम. तो सिंगल एंट्री सिस्टम में
और मेंटेन किया जाता है ओनली कैश बुक्स एंड पर्सनल अकाउंट फॉर डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। जबकि बात करें डबल एंट्री सिस्टम की, यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं: प्रिपरेशन ऑफ जर्नल, प्रिपरेशन ऑफ लेजर, ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट। फिर यहीं पे आता है फिर इसका जनरल। फिर जनरल को डिटेल्स बता देता हूँ। When the business transaction take place, the first step is to record the transaction in the books of original entry or subsidiary books of journal. Thus, journal is a simple book of account in which all the business transactions are originally recorded in the order and from which they are posted to the ledger accounts. अब इसमें कुछ रूल्स आते हैं जनरल के में। Write the names of the ledger account that will affected or account involved in the transaction of business. Identifying what types of accounts, personal, real, nominal, involved in the given transaction. Identify the which rules are followed by the involvement account. That means find which account should be debit or credit. Then the entry in the general format. So friends, basically बताते हैं date, particular, LF, DR, CR. DR और debit, CR और credit और यहाँ पे amount। और यहाँ पे फ्रेंड्स हम छोटी छोटी टिप्स से बात कर लें। डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। ये क्या करें, आपको डेट में लिखना है, कॉलम डेट में कॉलम डेट लिखनी है, पर्टिकुलर में आपको उसका डिस्क्रिप्शन लेना है, अकाउंट का डिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड लिखना है। लेजर फोलियो के बाद करें द पेज नंबर ऑफ द लेजर इन विच अकाउंट्स आर प्रिपेयरिंग appearing is entered in this column. Debit credit, the amount to be debited, the amount to be credited. अब बात करते हैं लेजर की। लेजर इज अ बुक वेयर all the transactions related to a particular account or corrected to at a place. A ledger is a book of which contains all accounts, whether personal, real, nominal, which are first entered in the general or specific purpose of certain books. फ्रेंड दोनों का डिफरेंस भी जरूरी है। लेजर है जनरल का, तो जनरल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, वेयर लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री. Transactions are recorded daily in the general, whereas posting in the ledger is made periodically. In the general, information about a particular account is not found at one place, whereas in the general ledger, information about a particular account is found at a one place only. Recording of transaction in the journal is called journalism, and recording of transaction is called posting. A journal entry shows both the aspect debit as well as credit, but each entry in the ledger shows as only aspect. जर्नल में प्रत्येक प्रविष्टि के बाद कथन लिखा जाता है, लेकिन कथन वही के कोई कथन नहीं दिया जाता है. Voucher, receipt, date with notes, credit notes, etc. So the basic documents for journal entry. Whereas journal considers basic record of entries, subsidy books, जिसमें फैन जर्नल एंट्री पास नहीं होती है. डबल एंट्रीज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि परचेजेस बुक्स, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक्स, सेल रिटर्न बुक्स, बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेबल बुक्स, जनरल प्रॉपर कैश बुक्स. सबसिडी डिवीजन ऑफ लेजर, डेब्टर लेजर, क्रेडिटर लेजर, general ledger. Rules for posting entries in the ledger. A separate account is opened for each account involved, either debit or credited in the given transaction, and entries for the journal are posted in the represent ledger account accordingly. The word likes to buy are used while posting the entries in the ledger account. To is used for account are posted debit side column. For a particular ledger, buy is used for when accounts are posted in the creditor side column. A particular account. The account which is debited in the journal should also debited in the ledger books, but difference should be representative account, credited account. Steps for basic balancing ledger account. First of all, calculate the totals of debited credit columns separately on a rough sheet to avoid mistakes. If the total debit side is having, then the credit side, the balance is called as debit balance, and written credit side is called as by balance FD. Hence, means carry forward and FD means carry forward. Similarly, if the total of the credit side is more than the debit side total, the balance called credit balance. Once we get the heavy total in the should be written in the both column of the total. Last year, closing balance is the opening balance of current year. So फिर हम एक illustration समझेंगे. Pass the journal entry, post them into the ledger closing books of accounts, trial balance of accounts.
समय सफर दीजिए। हम 1 मार्च 2020 की एंट्री बना रहे हैं। किरण देवी एजेंसी ट्रेड्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 20 लाख रुपए। यहाँ पे हम एंट्री शुरू करते हैं March 3rd। कैश डिपॉजिट टू बैंक ₹15 लाख। March 6 गुड्स परचेज फॉर कैश ₹5 लाख एट 20% क्रेडिट डिस्काउंट। March 8 मशीनरी परचेज ₹2,50,000 and registration expenses paid 50,000. Amount paid check. March 12 computer purchase by check ₹30,000. March 16 goods sold by cash 6 lakh and deposited into bank at the same day. March 18 carriage paid ₹10,000. March 20 goods sold or credited by Arjun and his brother ₹2 lakh and 25% of ticket discount. March 25 furniture purchase for office use by check ₹50,000. March 26 check received from Arjun brother ₹1 lakh and deposit into bank at the same day. March 27 cash withdraw from bank for office use ₹40,000. March 28 advertisement expenses paid by check ₹20,000. March 29 commission received ₹20,000. March 31 bank charges charge by 50,000 500,000. और जनरल में कैसे करेंगे? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अर्जुन अकाउंट्स ट्रेडर्स बाय किरण देवी एजेंसी ट्रेडर्स। डेट पार्टिकुलर LFDRCR March 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करेंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश डेबिटिंग में यहाँ पे आएगा 20 लाख रुपए। March 23 बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश डिपॉजिट इनको बैंक 15 लाख। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 40 लाख। बिजनेस गुड्स परचेज इन कैश बाई 25% ऑफ डेट। मशीनरी टू बैंक 3 लाख रुपए से। कंप्यूटर टू बैंक 30,000 रुपए से। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6 लाख रुपए से। कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट कैश एंट्री करने की प्राइस बीइंग कैश एक्सपेंस पेड। एडजस्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,50,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू एजेंसी अकाउंट 1 लाख रुपए। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपीज़। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड 10,000 रुपए बीइंग कमीशन रिसीव्ड। March 31 बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज़। टोटल आएगा फ्रेंड्स 52,15,000। अब फ्रेंड्स यहाँ पे लेजर बनाना स्टार्ट करेंगे। अब लेजर्स की एंट्री जैसे करेंगे इसमें टू कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू कमीशन अकाउंट रिसीव्ड 20,000 40,000 10,000 20,50,000 उधार करेंगे फ्रेंड्स। कैरिज साइड में बाई बैंक अकाउंट बाई परचेज अकाउंट बाई कैरिज अकाउंट बाई बैलेंस क्रेडिट 15 लाख 4 लाख 10,000 1,40,000 टोटल आएगा दोनों का 20,50,000। टू बैलेंस DB 1,40,000 से अपने बैंक अकाउंट बनाएंगे। टू कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट टू ब्रदर अकाउंट है जो 2,50,000 6 लाख। टू बाई मशीनरी अकाउंट बाई कंप्यूटर अकाउंट बाई फर्नीचर अकाउंट यहाँ करेंगे हम एंट्री 3 लाख से 30,000 से 50,000। अर्जुन ब्रदर अकाउंट में आएंगे फ्रेंड्स 1 लाख रुपए। यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस BD 22 लाख रुपए से। अब हो जाएंगे फ्रेंड बाई कैश अकाउंट बाई एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बाई बैंक चार्जेस बाई बैलेंस CD 40,000 20,000 5,000 70,55,000 टोटल आ जाएगा दोनों का 22 लाख। अब हम बनाएंगे फ्रेंड कैपिटल अकाउंट टू बैलेंस CD 20 लाख बाई कैश परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट 4 लाख बाई ट्रेडिंग अकाउंट 4 लाख। कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट 10,000 बाई ट्रेडिंग अकाउंट 10,000। मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट 3 लाख बैलेंस बचा हमारा 3 लाख। कंप्यूटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट 30,000 बाई बैलेंस CD की 30,000। सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट 7,50,000 बाई बैंक अकाउंट 6 लाख बाई ब्रोकर्स अकाउंट 1.5 लाख। एडवर्टीजमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट 20,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000। अर्जुन ब्रदर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 15 लाख टू बैलेंस CD 50,000 बाई बैंक अकाउंट 1 लाख बाई बैलेंस CD 50,000 तो बचे 1,50,000। फर्नीचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट 50,000 बाई बैलेंस CD 50,000। अब बैलेंस CD में एक बंद हो गया 50,000 से। कमीशन रिसीव्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 बाई कैश अकाउंट 10,000 टू बैंक अकाउंट 5,000 बाई प्रॉफिट एंड अकाउंट 5,000। अब बारी दे बैंक हमारे ट्रायल बैलेंस की।
First step, recording of transaction in general. The next step, posting to ledger. And the next step is the account process to preparing statement to check arithmetical accuracy of the transaction recording so far. This statement is known as trial balance. In other words, a list of balances of all accounts are credited and balancing all ledgers account. It is called a trial balance. तो फिर ट्रायल बैलेंस में हम क्या क्या कवर करेंगे ये हम आपको बताते हैं। वो कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट, कैरेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, अजीम ब्रदर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट, इसका टोटल कर देंगे फ्रेंड्स। जो हमारा टोटल निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आएगा 27,60,000। अब बारी बता देते हैं हमारे फाइनल अकाउंट की। ये हमें दो टाइप करते हैं बेसिकली, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड ये हमारा एक और रीजर है हमारा, जिसका सब टोटल करेंगे हमारा है बैलेंस शीट। अब फ्रेंड्स हमारे इसी में जुड़ जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। particular amount to purchase account, to raise account, to gross and profit and loss account, to advertising account, to bank charge account, to net profit account, by sales account, by closing account, by gross received account 40,000, 4,10,000, 3,60,000, टोटल 7,07,000। तो यहाँ टोटल आ जाएगा 3,70,000। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में फर्स्ट आता है फिर असेट्स। असेट्स में आता है फिर तीन टाइप के, फिक्स्ड असेट, टेंजिबल असेट्स, करंट असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स particular fluctuation assets। अब इसके आता है फिर हमारा लाइबिलिटीज, जो हमारा ओनर कैपिटल्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट्स कैसे बनाते हैं फ्रेंड, तो आपको बैलेंस शीट में फ्रेंड फॉर्मेट बदल जाता है इसका। तो पार्टिकुलर वर्ड लिखते हैं भाई, यहाँ पे लिखेंगे लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। लाइबिलिटी हमारी क्या कहेंगे, जो हमारे कैपिटल है, जो हमें नेट प्रॉफिट है। असेट्स हमारे बाकी जितने से सब असेट्स रहेंगे, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, डेप्टर्स, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, क्लोज स्टॉक। जनरल एंट्रीज, फिर सिंपल सा हमें फॉर्मेट बता दे रहे हैं जनरल एंट्री का, जो बेसिक होता है फ्रेंड्स ट्रायल बैलेंस से लेके जब बेसिक बैलेंस शीट तक, जो वह बेसिक जनरल एंट्री क्रिएट होंगी। इसके बाद फ्रेंड्स हम आपको दो क्वेश्चंस देंगे पोस्ट में करे हुए, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। कुछ समय बाद हम उसके आंसर्स भी पोस्ट कर देंगे, पर आप खुद से ट्राई कीजिएगा पहले एक बार फ्रेंड्स। चलिए जनरल एंट्रीज आपको बताते हैं इसकी क्या बनती है जनरल एंट्रीज। सो जनरल एंट्री की बात करें तो सबसे पहले हमें बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डेट पर्टिकुलर LFDRCR, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अर्जेंट अकाउंट, ऑफिस स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बाहर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू डैश, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रैम, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेबिट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड टू डेबिटर्स अकाउंट्स। सो फ्रेंड्स अब हम आपको 2 असेसमेंट देंगे पोस्ट पे, आप पोस्ट चेक कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगले चैप्टर से हम आपको पढ़ाएंगे, जो हमारा अगला टर्म है वो फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम 2.0 वर्जन के साथ। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में कवर करा है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, accounting terminologies, accounts, types of account, personal ledger, nominal, bookkeeping system, single entry, double entry, journal ledger, difference between journal ledger, subsidiary books, subdivision of ledger, rules for posting entries in the ledger, step for balancing ledger account, trial balance, final account, balance sheet, assets, liabilities, format of balance sheets। कल हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू टैली प्राइम। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब शेयर करें फ्रेंड्स, आकाश अग्रवाल इंस्टीट्यूट चैनल है, काफ़ी सारी कैटेगरीज की वीडियोस यहाँ पे आती हैं, प्ले चेक करें और आपको पता चलेगा कैटेगरीज वीडियो से। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं फ्रेंड्स, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग कैटेगरीज चैनल पे, कोर्सेज काफ़ी सारे आके लॉन्च होने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अगर आप नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब शेयर करें फ्रेंड्स, आकाश अग्रवाल इंस्टीट्यूट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टैली कब से स्टार्ट हुआ एंड कितने सालों के टैली को, ये भी आपको बताएंगे। स्क्रीन प्ले दिखाएंगे फ्रेंड्स टैली का, टाइटल बार, मीनू बार, स्टेटस बार, टैली की मेन शॉर्टकट कीज, इसको आप फ्रेंड्स जरूर नोट करके रखें।
कंपैरिजन बताएंगे टेली प्राइम और ईआरपी का। साथ साथ हम कंप्यूटर पे आपको दिखाएंगे टेली प्राइम कैसे परसेंट शो होता है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करें आकाश अग्रवाल इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स। टेली प्राइम 2.0 बीटा वर्जन is a complete business management software for small and medium business. टेली प्राइम helps to manage accounting, inventory, banking, taxation, banking, payroll, and much more to get of complexities and in turn focus on business growth. टेली प्राइम की जर्नी रिलीज फ्रेंड्स, पहला आया था फ्रेंड्स 1990 में रिलीज होता टेली 3.0, फिर आया 1991, 1992, 1994, 1996, 2001 में आया टेली 6.3, फिर आया 2005 में, 2006 में, 2009 में, 2020 में, एंड ऑफ 2022 जिसमें टेली प्राइम 2.0 बीटा वर्जन जुलाई को लॉन्च हुआ, 12 जुलाई। जो 2009 वाला था फ्रेंड्स, तो वहाँ चला था हमारा टेली ईआरपी 9। समझ 2009 से 2021 तक के एंड तक, मतलब जून के लास्ट तक चला है टेली ईआरपी 9। टेली प्राइम 2.0 बीटा सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ जानकारी देंगे फ्रेंड्स। टेली प्राइम 2.0 बीटा is the latest update version of Tele. In other words, Tele new product. Now Tele Prime ERP 9 is officially replaced with Tele Prime software. It's launched on November 2020 by the Tele Solutions. चलिए इनको फीचर्स बात कर लेते हैं हम इसके। In Tele Prime 2.0 beta, anyone can easily access business information through various reports. Tele Prime 2.0 makes it's amazing simple to create invoice records. You can verify any GST IN. This application has strengthened and the functioning of the mouse so that you can operate the application as seamless as they navigate. It's one of the keyboard. Financial reports को हम इसमें सिंपली ऑलरेडी पहले से कन्फिगर को सेव कर सकते हैं इन दिस वर्जन में। चलिए कुछ कंपैरिजन करते हैं कि टेली ईआरपी 9 बेटर है या टेली प्राइम 2.0। इसका हम कंपैरिजन करेंगे एक्सेस टेली डाटा। टेली ईआरपी 9 में फ्रेंड एक्सेस कंपनी डाटा बाय स्पेसिफिक डाटा पैक। टेली प्राइम में होता है एक्सेस कंपनी डाटा फ्रॉम एनी पार्ट और ड्राइव और रिमोट कंपनी एंड व्यू डाटा स्टेटस लाइक migration requirement data collected. Charts of account Tele Prime में options of charts account. This allows you to access all your marks including groups, lasers, vouchers, tag, etc. जबकि टेली ईआरपी 9 में users had to make minimum 3 tags to open each of these files. Printing invoice के बारे में टेली ईआरपी 9 when a user prints invoice with multiple items, the invoice gets printed in the multiple pages as unused blank spaces. जबकि टेली प्राइम में you can optimize printing to save paper. This feature will reduce your pages invoice to a 2-page invoice, thus saving payment cost, and other costs. Method to download and installation Tele Prime 2.0 Beta. सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र खोलना है। इसका हम अभी आपको आने वाली कुछ मिनटों में डेमो भी देंगे। वहाँ पे आपको सर्च करना है telesolutions.com। टेली सोशल मिलेगा, वहाँ पे देखा होगा टेली टॉप करियर वर्जन। फाइल आ जाएगी, आपको वो डाउनलोड कर लेनी है, इंस्टॉल कर लेना है, लाइसेंस पे आ जाना है, फिर आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है वर्क एंड एजुकेशन मोड। इसका डेमो अभी कुछ देर बाद ही देंगे। थ्योरी क्लास चलिए फिलहाल हमारी फ्रेंड्स। Method to migrate Tele ERP 9 data. Tele Prime 2.0 comes with a reliable tool to migrate your existing company data and make it. Press Alt plus F3 select company. To open the list of company, you can see start migration required against the companies which are on a lower release. Or press F1 to troubleshooting or migrate
You have to select the company that you want to migrate plus enter. Press R migrate to continue. When navigation complete, you will find your company data ready to be used. Opening a company. Opening Telegram or a company. You have, if you have purchased a single user silver license, then you can activate the license on one computer. However, if you have multiple gold license, then you need to activate the license on a computer or online. Thereafter, you can configure all other installation using the same license. जैसे आप वर्क एजुकेशन मोड आप कर सकते हैं फ्री के लिए. एक्टिवेट स्क्रीन लाइसेंस. न्यू लाइसेंस अगर आप नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, उसके लिए फ्रेंड्स क्या करना है आपको? Start your Telegram 2.0 beta. The welcome on the Telegram screen appears. Click activate new license. If you have a single site license, then enter your series number. Activation key. Please note, the email ID provided here will be linked to your account and used for future communication activities. Press enter to proceed. To unlock license screen appears. Press enter to unlock your license. Once your license is unlocked, the following message appears. Depending on the size and the scale of your business, you can have different setups. You can refer to the license Telegram to know more about the different options. So इसकी इंट्रोडक्शन बस कुछ ही दिन में देने वाले हैं टेलीग्राम 2.0 का, जहाँ पे टाइटल बार है, मेनू बार है एंड आपका स्टेटस बार है. हम टेलीग्राम के कुछ शॉर्टकट्स किए हैं, ये आप नोट कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये शॉर्टकट कीज आपको आगे के लिए बहुत काम आने वाली हैं टेलीग्राम यूज़ करने के लिए. Telegram 2.0 beta shortcut keys and functions. Shortcut and actions. Alt plus G to primarily open a report and create masters and watch in the flow of work. Control plus G to switch a different report and create masters and watchers in the flow of work. ESC to go back to the previous screen by closing the open screen to remove inputs that are provided. Select for a field. Alt plus K to open company top menu. F3 to switch to another company from the list of open companies. Alt plus F3 to select and open another company located in the same folder or other data path. Control plus F3 to shut the currently loaded companies. Control plus F1 to open tele-help topics. F11 to open the feature screen. F12 to open the list of configuration applicable for the report view. Alt plus K to open the company menu with the list of actions. Alt plus Y to open the list of actions applicable to managing company data. Alt plus Z to open the list of actions applicable to sharing and accessing your company data. Alt plus O to open the report menu. Body masters. Alt plus M to open the email menu for sending transaction or reports. Alt plus P to open print menu for printing transaction reports. Alt plus E to open the export menu for exporting masters transaction reports. F1 to open the help menu. Control plus F1 to open tele help topics based on context. Control plus K to select the display language. Control plus W to select the data entity data applicable. Control plus up down to move the first last menu in the screen session. Control plus left slash right to move to the leftmost, right of the most, drop down to most. Home and PGUP to move from any line to the first line in the list. Home from any point in the field, and page down to move for any line and to move from any point in the field. Up arrow to move one line in the list.
Down arrow to move one line down in a list. Left arrow to move. Alt 1 to insert. Alt 2 to create. Enter to delete row. Alt D to delete. Alt A to add a voucher. Control plus R to remove entry from report. Alt plus T to hide or show the details in a table. Alt plus U to display all hidden lines. Control plus U to display the last hidden line. Shift plus enter to expand or collapse. Control plus enter to enter a master during voucher. Alt plus 7 to view the report in a real space bar to select dislike a line. Shift plus speed bar to select and dislike a line report. Shift plus up down to perform linear selection. Control plus space bar to select or deselect all the lines. Control plus shift end to select or deselect the line, and Control shift home to select deselect lines till the top. Control plus Alt plus 1 to invent section in the line in the report. Alt plus V to open the GST portal. Alt plus C to add a new column. Alt plus A to alternate a column. Alt plus D to delete a column. Alt plus N to auto repeat columns. Alt plus F12 to filter data. Control plus F12 to calculate balance using vouchers. Control plus B to view values a different way. Control plus change. Control plus J to view the expectation release of a report. Tally prime shortcuts in a vouchers. F4 contra. F5 payment voucher. F6 receipt voucher. F7 general voucher. Alt plus F7 stock general voucher. Control plus F7 physical stock. F8 to open sales voucher. Alt F8 delivery note. Alt control F8 sales order. F9 purchase voucher. Alt F9 receipt order. Control F9 purchase order. Alt plus F6 credit note. Alt plus F7 F5 debit note. Control plus F4 payroll voucher. Control plus F6 rejection in voucher. Control plus F5 to open rejection out vouchers. F10 to view a list of all voucher or drawer to revise the nation from the previous ledger. Alt C to open the calculator panel by on field. Control plus T to make a voucher post date. Alt V to delete a voucher. Alt V to open a manufacturer general voucher. Control D to remove item. Control F to audible details. Control R to retrieve the narration. Control H to change mode. Alt S to open the stock. Control L to make vouchers optional. Daily brand shortcuts in masters and vouchers. Tab to go to nation input. Shift tab to go to previous backspace to remove a value typed. Alt plus C to create a master. Alt plus C to open. Control plus 1 to add more details. Alt plus 4 plus Control plus 4 to insert the base currency. Page up, page down. To open previous to open next. Control Z plus Control Alt Z copy text. Control V, Control plus Alt V to page input. Daily prime shortcuts for vouchers and reports. Control E to export. Control M to email. Control B to print. Alt plus A to define the short adjustment. Alt plus X to cancel a voucher. Alt plus Z to zoom. Daily prime shortcuts reports vouchers and mastery. Plus to navigate. Minus to navigate. Then next the previous. F2 to change the data. Control A to exit or save. Alt plus enter to expand collab. Control plus N to move the last field. Control plus home to move the first field. Alt plus F2 to change the data voucher. Control plus N to open all hide calculator panel. Control plus Q to exit a screen. Data processing. Shortcuts across time panel. Control plus Alt plus R to rewrite data. Alt plus Z to symbolize data. Alt plus F4 to quit the application.
Control plus Alt plus B to view the bed. Control plus Alt plus T to view the TD and और डिटेल। फ्रेंड्स चलिए अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं टेलीग्राम पे डाउनलोड करते हैं टेलीग्राम का स्क्रीन प्ले टाइटल बार डिस्क्रिप्शन क्या का पॉइंट ऑफ दिखाते हैं। चलते हैं अपने स्क्रीन पे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स बेसिकली टेलीग्राम का सॉफ्टवेयर ये है हमारा फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स अभी हम आपको बताएंगे कैसे आप इसको डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको ओपन करने से पहले हम इसका प्रक्रिया बताएंगे कैसे इसको डाउनलोड करेंगे कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना है पहले अपने क्रोम में। तो फिर हम खोले अपना माइक्रोसॉफ्ट एज। इसी करिए आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड टेली लेटेस्ट वर्जन। यहाँ पे लिख रहा है फ्रेंड्स telisolution.com डाउनलोडर, यहाँ पे आप क्लिक करना है। तो यहाँ जाकर देखिए मैंने नया सॉफ्टवेयर का अपडेट किया वर्जन है। ऐसी फोटो है फ्रेंड्स टेली ERP9 से बंद होके ये हो चुका टेली प्राइम रिलीज 2.1। ऐसे डाउनलोड कर लेंगे फ्रेंड्स, डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड का सेटिंग में जाना है। डाउनलोड आपका सब यहीं देखेगा फ्रेंड जो आप ये डाउनलोड करेंगे आप। ये देखिए यहाँ से आप तक जाएगा। चलिए अब टेलीग्राम का इसके क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम अपना टेलीग्राम ओपन कर लेते हैं अपना हमारा स्क्रीन प्ले टेलीग्राम का। ये मैंने कुछ ऐसा खुलेगा। सर देखिए पूछ रहा है यूजर लाइसेंस अगर आपके पास है तो एक्टिवेट एग्जिस्ट लाइसेंस। अगर आपके पास एग्जिस्ट लाइसेंस है तो यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं उसको। एक्टिवेट न्यू लाइसेंस यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन हमें एजुकेशन मोड चाहिए तो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे क्लिक कर देंगे आप। यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया, यहाँ पे वो आ गया। हम यहाँ पे नई कंपनी भी बना सकते हैं डायरेक्टली या पुरानी कंपनी को भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से करना है क्विट। सो भाई ये देखिए यहाँ से बेसिकली स्टेप्स आ गए हैं। क्रिएट करना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, बिल एलोकेशंस, एलोकेशन ऑफ क्रेडिटर्स, बिल बाय बिल फीचर्स ऑन वॉच एंड एंट्री ट्रांजेक्शन असाइनमेंट। तो ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे अपने डेली विद GST के साथ। फ्रेंड्स लास्ट में आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स। चैनल को शेयर में आकाश अग्रवाल इंस्टीट्यूट। इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी। The term company is a generic term and not confident to any organization registered under company act. In the Daily Prime 2.0, the term company represents an entity for which independent set of accounts is maintained. It may be a company, partnership firm, hub, individual, NGO, or even a branch office for which a set of account composed is maintained by accounting. For accounting, for each entity, you can create a profile with the term as company in Tally. Create company. Steps for creating a company. If you already have one company open and would like to create another company, click on the K company on menu bar and press Alt plus K. Create a command. Go to the right side of the company home screen. Click on affiliate company and then click on create company command of from charge company options. Then click on F12 configuration button to set up for the following options. Provide additional base currency details. Yes. Use Tally wallet password to encrypt company data. Fill the required related with the company such as company name, mailing name, address, PIN code, select state, country,
as well as you have filled several required information such as telephone, mobile number, fax, email, website, financial year details, etc. In this year, you enable this feature by writing yes, which you want to disable. Feature by write no, and press enter to go to enable or disable next features. Exit or press Ctrl or C to save the details, and after completion of the above requirement information, you will see that the communicated successfully in your Telegram and Twitter software. Creating groups company. So ग्रुप में मैं पहले बताते हैं आपको कि टेली ईआरपी में फ्रेंड्स ग्रुप बनाने पड़ते हैं, लेकिन टेली प्लान में ग्रुप्स इसमें ऑलरेडी पहले से सेव होते हैं. चलिए जानते हैं ग्रुप्स क्या होते हैं. This is a needed when you need to create a group of company which owns number of about this group of company concept. A company which forms and establish some other companies with different orientation and investors. Then of course we need to maintain the records of that company in separate way. Financially merge the balance summary in the form of profit and loss of the group of company. स्टार्ट डाल लेते हैं ग्रुप के. क्लिक ऑन के कंपनी और प्रेस Alt+K. Create K company. Company edition will appear on your screen. The press of Alt+R or click on the group company button from the right side of the window. And other information about the group company and add members only. Do this and financially set the records of you enter as a group of companies. Selecting company. To operate company in a Telegram, we need to select a create. Setting company, we have to work with alternating company. You can alter the basic information of a company, then name or change the company name, address, telephone number, email address and currency rate. Backup. बैकअप में आप कंपनी का बैकअप करा सकते हैं. रिवर को डाटा रखने आज सब डाटा सेव करेंगे. Restore. As you keep backup of your valuable data to a whatever media, so that it can transfer to somewhere else. उसका आप restore कर सकते हैं. Shut close. तो यहाँ पे ऐड करते हैं मतलब हम पे कैसे करेंगे और shut करेंगे. This very function is save you to shut down or close or certain. This will be to a better no longer want to manipulate or imprint the data because there is no longer a bit ignorant तो फिर आप Ctrl plus F3 आएंगे तभी साला कंपनी चूज करेंगे want to close और open Ctrl plus F3 के साथ display company data. You can display the company data in two parts. By using option to provide display company data in two parts. This is required only when company is based on partition and one wants to separate with his her own parts and share. Then the company is divided into the parts. Steps. Press Alt plus Y to then you to see data menu. After selecting the options, one need to select the company to split into the at least into two parts. Now mention the data from the splitting of the company data has been applied. Here have been named. Data need to split company data. Customizing the company. Customizing the company means you are able to change or customize the features of the company you want. This is there a number of features of company you can customize. This will be requirements such as inventory management, based on cost, payroll management. You can enable this feature. ये आप फीचर यूज कर सकते हैं प्रेस 11 से गेट टैली में जाकर delete the company. You will see the company function menu when chosen order option select company you need to delete from your list of companies and press enter key to Alt plus delete key. Introduction to masters. Master the containers with account data.
These are the heads which will be set one and use them in places such as account watches, creation, rewards, generation, etc. Data storage master is independent. ये थी हमारे होते हैं अकाउंट मास्टर्स इन्वेंटरी पॉलिसी फिर बचा थोड़ा थोड़ा चलने के दिन में अकाउंट मास्टर्स they follow the management masters groups lasers and watchers type each one of them when click what you lead to creation screen groups creation and drawing groups are collection of lasers of the same nature. Color groups are maintained to determine the hierarchy of lasers account which for determining presentation and complaint reports. Career groups create type of select group and press enter. Enter the name of the group. In the field under, select the parent group under there which the group has been classified from the list of groups. For example, current liabilities. The group creation screen areas now suppose create a group option is the shown. Press enter key to Control plus A to save the group creation screen. Predefined group in Tally Prime 2.0. There are types predefined groups, primary groups, subgroup जिनमें हमारे आती हैं कैपिटल एसेट, कैपिटल अकाउंट, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, लोन एंड एडवांस, loans, expenses, miscellaneous expenses, branch division, sales account, purchase account, direct income, indirect income, direct expense, indirect expense, stock and stock, debtors, duties and tax, provisions and irregulars, bank audit, secured loan, unsecured loan. Some detailed predefined groups: capital account, reserve, current assets, bank account, cashing and deposits, loan, stock and current liabilities. Predefines lasers in tally, cash, profit and loss account, display and use master, get your daily, charge if account, lasers. You can view the expansion, you can do the data, display current report, presenting the control position. Laser creation. A laser is a visual account has to be understood in the creation of a laser. Typically, press enter. Press Alt G. Create master. Type laser. Press enter. Enter the name of the laser. For example, capital account under capital account group. Press enter key and putting the open balance to bring the acceptance dialog box. Alter and delete lasers. Get way of telling. Type select all lasers and press Alt plus G. Select all type laser name which you want to alter. When you see the alteration screen, to delete any lasers. Similarly, for deleting of lasers, also go to Gateway Kelly on lasers. Select the lasers in the list and now press Alt plus D to delete the laser account. Creation of multiple lasers. You can create multiple lasers at a time in this mode. This will save the time the users from paying lasers. In laser mode, laser mode option, all items allow create lasers and groups. Steps go to admin get the charts account. Lasers. Press enter or press alt and plus G to go type of select to charts accounts. List of ओ will मेरी appear on the screen जानियों with तेरा each मुस्कुराना multi-masters. तो गलत बात है अपने Select आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है create laser selecting and press 12 key for the laser creation. Any the following condition is allow ओ मेरी passes जान तेरा on यूं in while मुस्कुराना तो when you make गलत lasers. बात है अपने Notice आशिक को triple संकट L में लाना तो गलत power बात lasers. है जब मैं Only using तुझसे the मिला lasers 19 का था दिन याद है मेरी only वैलेंटाइन का था just दिल check से apply आके यूं फिर the parental conditions. मुस्कुराना जो गलत बात Hello है question आई एम else हियर date will be 1.
ओ मेरी जान तेरा यूं मुस्कुराना तो गलत बात है, अपने आशिक को संकट में लाना तो गलत बात है। And then पार्टी पे मैंने कहा शॉपिंग टू कैश छू कर दिल को छू हो जाना हालत है तेरी बुरी, हाँ छुप के दिखना दिख के छुपना आफत है देखो बड़ी, क्रिएट करना ग्रुप अपलोड देखिए देंगे और लेजर चढ़े वीडियो जो बनवाएंगे। है इश्क वही जल्दी जल्दी यहाँ टैली मिलेगा प्राइम है विद रिस्क जीएसटी। नहीं आएंगे। छोटे कपड़े पहन के यूं नचना तो गलत बात है, हाँ छोटे कपड़े पहन के यूं नचना तो गलत बात है। जब मैं तुझसे मिला बदना इनका था, तुझे याद है मेरी बदना इनका था, यूं पुराने लवर को सताना तो गलत बात है। I'm there. Left, or you can like that. Check it would right. All right, the ladies and the ladies and a man and a man and a lady and the ladies and a man and a man and a lady. Now you can like this. Shake in the left, then you like that. Shake it to right. On the ladies on the land, on the man and the ladies. All the ladies on the man, all the ladies on the ladies. You can like this. Shake to the left, or you can like this. Shake to the right. On the ladies on the man and the ladies on the man. Ladies on the man and ladies on the tent. जोड़ का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा, जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा, ये है उदासी प्यासी प्यासी, शादी से छदम ले लो फांसी, लाखों दुखों की होती है ये चलिए वजह, फिर आप देखते हैं ग्रुप्स हाँ कैसे बनते हैं। क्या ग्रुप इसमें ऑटोमेटिकली सेव है या नहीं। इसमें हमारे ग्रुप्स ऑलरेडी बने होते हैं, ईआरपी में हमको बनाने पड़ते थे, लेकिन हम खोया है खोया है खोया है आप खोया ग्रुप्स में यहाँ ऐसे पे दे रखे हैं सब ग्रुप्स की लिस्ट। लहरों में खोई हूँ ले यार जैसे, समय देखते हैं लेजर कैसे बने। चमके जिसकी दो आंखें मैं ही तो हूँ ना, झरनों में गाँव में झीलों से बोलने आगी तू सुनना। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके लेजर्स में जाएंगे, यहाँ पे मल्टीपल हमारा मास्टर्स है, इसको हम कीबोर्ड में कंट्रोल एच भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लैपटॉप में है तो हम ऐसे करते हैं, मल्टीपल मास्टर में जाके मल्टीपल पे एंटर करेंगे, हमारा आगे अंडर ग्रुप हमारा हमेशा और आइटम्स ही रहेगा, एंटर करके यहाँ पे लेजर्स के नेम हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एंटर देंगे किसके अंदर आएगा, परचेज का बना दें पहले लेजर, परचेज अकाउंट अंडर ही हमेशा परचेज क्या आता है। ओपनिंग वाले अगर चाहे तो दे सकते हैं, नहीं दे सकते, आपकी इच्छा के ऊपर है। तो वैसी टाइप से आप लेजर बना सकते हैं। चलिए थोड़ी ये प्रैक्टिस करते हैं हम अपने जनरल एंट्रीज की। सुन जरा तुझे पिया दिलदार मैंने चुना, तो गाइस हम जहाँ जहाँ जाएगी तू वहाँ वहाँ आऊँगा मैं रोके से, मैं ना मानूं जो कहे हजारों हम कहती जहाँ क्या जानूं, जो पर भी मुझे को रोके
मुझे रोके मैं दो कर दूं उड़ा से दो पल में। तू सिंगारिया बाबरा तू है मेरा। कमेंट करा कोई वीडियो कैसी लगी है। सो भाई वेलकम टू चैनल इंसाइटफुल आकाश। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को कैसे सर्च करेंगे। कि फ्रेंड्स हमने 1 महीने में 1,000 सब्सक्राइबर करके दिखाए हैं फ्रेंड्स। अब आपको ग्रो करना है, आपकी बारी है आपको ग्रो करने की। हमारा टारगेट हो गया, अब आपकी बारी है फ्रेंड्स। अब हम सबको फ्रेंड्स मिलके वॉच टाइम पे काम करना है। वॉच टाइम पे काम करने के लिए आपको फ्रेंड्स हमारा वीडियो देखना पड़ेगा जो हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है। सो मैं आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप हमारे चैनल सर्च कैसे करेंगे। सर्च करने के लिए फिर आपको जाना है यूट्यूब पे। सो भाई यहाँ पे हम यूट्यूब पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे डालना है, आप सिर्फ इंसाइटफुल आकाश डालेंगे, लिखेंगे INSHEH इंसाइटफुल आकाश, ये लिखेंगे फ्रेंड्स। सर्च करेंगे तभी हमारा चैनल टॉप पे आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जब हमने पिछली बार आपसे बात करी थी कि हमारा थोड़ी सी सजा मिली है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने थंबनेल हमारे गायब कर दिए कुछ वीडियोस के। तो बस यही सज़ा मिलती है, थंबनेल हमारे गायब हो जाते हैं कुछ महीनों के लिए, बस यही सज़ा मिलती है। बाकी फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें, सर्च कर लेंगे। आपको यहाँ पे फ्रेंड्स चैनल मिल जाएगा, तो वो सब्सक्राइब कर लेना है यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे बेल आइकन पे प्रेस कर देंगे, घंटा दबा देना है और प्रेस कर देना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो में मिलते रहें। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको यहाँ पे कैटेगरी की वीडियो है। कैटेगरी फ्रेंड कुछ हमने कम कर दी हैं फिलहाल के लिए। हमने फ्रेंड्स चैनल पे वही कैटेगरी रखेंगे कि हमारी खुद की होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, कॉपी के चक्कर में हमें पढ़ना ही नहीं है। सो फ्रेंड्स आप